How are you all? My name is Shreya and I'm here to discuss with you another MCQ session. Today we are going to discuss money and banking. Are you guys excited? Well, I am. As you know, CBSE has already released your curriculum for your exams. The first set of exams will be held in November and that will be an MCQ paper. You will get 90 minutes to complete that paper and that will be for 40 marks. You have to do a lot of practice for that. So, are you guys ready? Yes? Let's begin. Let's begin with today's session. The first question for the day is, what is the defect of the barter system? Do we know what is barter system? Yes, barter system is a system जब हमारे पास money नहीं हुआ करता था. We did not have a medium of exchange. तब हम क्या करते थे? We used to exchange goods. अगर किसी को rice चाहिए और किसी को shoes चाहिए तो they used to exchange it with each other. हमारे पास एक proper medium of exchange नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, राइट? सो इस बार्टर सिस्टम में किस तरह का डिफेक्ट था? लेट्स सी. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. यस, वी कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम. नेक्स्ट, difficulty in the measurement of value. Yes, we could not use to measure the value, right? We could not exactly measure the value. Yes, this is another drawback. Next, difficulty in store of value. Of course, I can say that अब किसी के पास राइस है या किसी के पास ब्रेड है, लेट्स सपोज, हाउ कैन दे स्टोर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? दे कैन नॉट, राइट? सो कैन वी से द आंसर इज ऑल ऑफ दीज? Yes, the answer to this question will be all of these. Barter system has a lot of defects, that is lack of double coincidence of bonds, medium of exchange, store of value, etc. Right? Moving on. The next question says, what solves the problem of double coincidence of bonds? Guys, do we know what is double coincidence of bonds? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स तब अकर होता है जब दोनों इंसान को सेम चीज एक्सचेंज करनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शू सेलर को राइस चाहिए एंड जो राइस बेचता है उसको भी शूज ही चाहिए रिटर्न में, दैट विल मेक डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. बट क्या ये जरूरी है ऐसा हमेशा हो? क्या एक इंसान को जो चीज चाहिए वही दूसरा बेच रहा हो? क्या ये जरूरी है? आई डोंट थिंक सो. वी नीड अ मीडियम टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक. तो वो किसने सॉल्व किया? वॉज इट गुड्स? Was it banks? Was it money? Or was it all of the above? I guess you know the answer. Yes, the answer is money. Money solved this problem of double coincidence of bonds. Moving on. The next question says, which of the following is the function of money? Is it medium of exchange, store of value, measure of value, या all of the above? Money हमारे लिए क्या करता है? क्या वो as a medium of exchange काम कर पाता है? Yes, we can say that we exchange goods, we exchange services through money. Store of value. Can we store money? Yes, we can. Can we measure money? Measure of value. Is it a function of money? Yes, it is. So let's say, guys, what's the answer for this question? The answer is all of the above. Right. Moving on to the next question. Which function removes the problem of double coincidence of bonds? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट? इस प्रॉब्लम को कौन सा फंक्शन ऑफ मनी हटाता है? इज इट मेजर ऑफ वैल्यू? इज इट मीडियम ऑफ एक्सचेंज? इज इट स्टोर ऑफ वैल्यू और नन ऑफ द अबव? यस, थिंक इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का ऐसा फंक्शन है जो हमें हेल्प करता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम को हटाने में, राइट? मूविंग ऑन. The next question says, money supply is which concept? Is it a stock concept, a flow concept, monetary concept, or none of the above? Guys, money supply को हम in a day at a particular time value करते हैं या फिर throughout the year value करते हैं? I don't think so. हम throughout the year करते हैं. Yes, हम उसको at a particular day at a particular time value करते हैं. तो money supply will be considered as a stock concept. Next question. इंडिया फॉलोज विच सिस्टम फॉर इशूइंग करेंसी? इंडिया कौन से सिस्टम को फॉलो करती है करेंसी को इशू करने के लिए? इज इट फॉलोइंग फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, पेपर करेंसी सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम और नन ऑफ द अबव? अब ऐसा तो होता नहीं है कि गवर्नमेंट का जितना मन आए वो उतना पैसा इशू कर दे, राइट? दे कैन नॉट डू दैट. ऐसे तो कुछ भी नहीं बचेगा, इकोनॉमी खत्म ही हो जाएगी, है ना? राइट. सो विच सिस्टम डू दे फॉलो टू इशू करेंसी? आता होगा आपके दिमाग में भी कि पैसे क्यों नहीं इशू कर देते, सब प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी. बट दे कैन नॉट do that. They have to follow a system. And what do you think, which system do they follow? आपने सुना होगा कहीं पे कि करेंसी एक गवर्नमेंट उतनी ही इशू कर सकती है, इंडिया की गवर्नमेंट उतनी ही करेंसी इशू कर सकती है जितने के उसके पास रिजर्व्स है, राइट?
So which system is it following? It is following a system of minimum reserve system. Right. The answer is option C. Moving on to the next question. The next question is, who is the monetary authority in India? Is it RBI? Is it government? Is it commercial bank? Or is it Ministry of Finance? Guys, we know who is the apex institution in India. Monetary authority कौन है India की? Yes, we know the answer. It is RBI. RBI is the apex institution that handles all the monetary issues in India, right? Can we move to the next question? Yes. Who issues rupees 2 and more denominations, currency notes and coins? rupees 2 and above के जो currency notes and coins होते हैं वो कौन issue करता है? क्या वो RBI issue करता है, government issue करती है, commercial banks issue करते हैं या Ministry of Finance issue करती है? Guys, think. rupees 2 and above. कौन है हमारा apex institution? Is it RBI? Yes. तो currency notes कौन issue करता है? It is RBI. RBI issues all these currency notes which are above the denomination of 2, right? 2 and above, right? Moving on to the next question. Who issues ₹1 denomination currency notes and coins? हमने ये question भी discuss किया था, right? Is it RBI? Is it government? Is it commercial banks? Or is it Ministry of Finance? Guys, you have to think. RBI तो rupees 2 and above के currency notes and coins को issue करता है. तो rupees 1 के denomination के currency notes कौन issue करता है? Can we think that? Do you know the answer? Yes, we are correct. The answer is government. Government issue ₹1 coins, but it is signed by the Ministry of Finance. The Secretary of Ministry of Finance signs these coins. Right? Are we clear? Can we move to the next question? Yes. The next question says, which of the following is not the primary function of commercial banks? Primary, guys. Primary function, which is not the primary function of commercial banks. I hope you know commercial banks क्या होते हैं. Commercial banks वो banks होते हैं जो profit motive के लिए काम करते हैं, right? So let's see the options. Option A says accepting deposits. Option B says advancing loans. Option C says both A and B, and option D says none of the above. We have to choose what is not the primary function of commercial banks. I guess commercial banks accept करते हैं deposits. Yes, they do accept it. वो loans भी देते हैं, वो advance भी करते हैं. So I don't think option A and option B are correct. Option C in itself is option A and B, so that cannot be correct. Which leaves us for option D, that is none of the above. None of these functions are not a primary function of banks. Commercial banks do all of these things, right? Can we move to the next question? Yes. Next question says the fraction to be kept legally from the deposits is called. Guys, हमें पता है RBI ने कुछ certain rules and guidelines दी हुई हैं हमें, right? जिससे हमें कुछ regulations follow करने पड़ते हैं, कुछ reserves maintain करने पड़ते हैं. That are CRR, LRR, SLR and none of the above. But right now, what they are asking us is the fraction that is to be kept legally from the deposits. हमें अपने डिपॉजिट्स जो हमारे पास डिपॉजिट्स आते हैं, जो बैंक्स के पास डिपॉजिट्स आते हैं, उसमें से कितना पैसा लीगली अपने पास रखना होता है और बाकी हम एडवांस कर देते हैं, राइट? सो इज इट CRR? नो. इज इट SLR? नो. इज इट LRR? यस, इट इज LRR. दैट इज द लीगल रिजर्व रेशियो. बैंक्स को अपने पास एक स्पेसिफिक डिपॉजिट, एक स्पेसिफिक रिजर्व रखना पड़ता है और बाकी का जो पैसा है वो आगे एडवांस कर सकते हैं. कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस. Next question says, money multiplier is also known as, is it credit multiplier, deposit multiplier, both A and B or none of the above? Guys, money multiplier को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? Credit multiplier, deposit multiplier, yes? Do you think so? Money multiplier क्या होता है? Money multiplier से जो banks हैं वो reserves की मदद से money multiply कर पाते हैं economy में, right? So हम इसको credit multiplier बोल सकते हैं, yes. हम इसको deposit multiplier बोल सकते हैं, yes. So the answer can be both A and B. Can we move to the next question? Yes. Next question says, if LRR is 20%, what is the money multiplier? What is the value of money multiplier? Guys, can we think the formula for money multiplier? We know that money multiplier is inversely related with LRR. So the formula becomes money multiplier equals to 1 upon LRR. That will give you the answer of option C. That is 5. If the LRR is 20%, your money multiplier value will be 5. That is 1 upon 20%. Are we clear? Can we move on? Yes. Next question says,
commercial banks work for the purpose of what? Guys, ये तो बहुत easy question है, ये तो हमें पता है. commercial banks क्यों काम करते हैं? क्या वो welfare चाहते हैं? क्या वो profit earn करना चाहते हैं? क्या दोनों चीजें चाहते हैं या कुछ भी नहीं? Commercial banks profit earn करना चाहते हैं. The main motive of all the commercial banks in India is earning profit. They want to earn more and more profit, right? Moving on to the next question. Next question says, what is the amount which commercial banks are required to keep with the central bank compulsorily? आपको पता है central bank that is RBI उसने एक certain rule बनाया हुआ है कि हमें कुछ reserves को maintain करना पड़ता है. ऐसा reserve जो banks को RBI के पास रखवाना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? Is it CRR? Is it SLR? Is it LRR? Or is it repo rate? I guess the option is option A. It is CRR. This is the mandatory reserve that all the banks have to keep with the RBI, that is Reserve Bank of India. Can we move to the next question? Yes. Next question says, what happens when central bank decreases the CRR? Guys, we have to think. अगर banks ने अपने डिपॉजिट में से कुछ रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखा हुआ है तो बैंक्स के पास पैसा कम है. अगर बैंक्स के पास पैसा कम है तो इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा, राइट? अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस अमाउंट ऑफ सीआरआर को डिक्रीज कर देता है, मतलब अब बैंक को आरबीआई के पास कम पैसा रखवाना पड़ेगा, मतलब बैंक की जो कैपेसिटी ऑफ गिविंग लोन्स है, बैंक के पास जो पैसा है लोन देने के लिए वो बढ़ जाएगा. तो क्या इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होगा? यस. क्या वो ज्यादा लोन दे पाएंगे? यस. तो व्हाट विल हैपन? विल मनी सप्लाई इंक्रीज, मनी सप्लाई डिक्रीज, नो इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई और नन ऑफ द अबव? वी नो सीआरआर कम होने से बैंक का जो लोन देने की कैपेसिटी है, बैंक के पास जो पैसा है वो बढ़ जाएगा. सो द ऑप्शन, द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन A, that is money supply in the economy will increase, right? Moving on to the next question. The next question says, what happens when central bank increases the margin? Guys, जब सेंट्रल बैंक मार्जिन बढ़ा देगा तो लोगों को, इन्वेस्टर्स को अपना पैसा ज्यादा जमा कराना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास, राइट? उससे होगा क्या? इकोनॉमी में जो पैसे का फ्लो है, जो मनी फ्लो है वो कम हो जाएगा. सो द मनी सप्लाई विल डिक्रीज. इफ द मार्जिन, अगर आरबीआई मार्जिन बढ़ा देता है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इट विल डिक्रीज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question says, which of the following is not a commercial bank? Easy question again. State Bank of India, Punjab National Bank, RBI or Canara Bank? This is the easiest question that you'll ever find. Yes, the answer is RBI. RBI is our apex institution. It is not a commercial bank. Moving on to the next question. What is the difference between amount of loan and the market value of securities called? Difference between the amount value of loan and the market value of securities called. इसके difference को हम क्या बोलते हैं? Is it spread? Is it margin? Is it repo rate? Or is it bank rate? Guys, we have to think. लोन के अमाउंट में और सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं मार्जिन. यस, द आंसर इज ऑप्शन बी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the rate at which central bank gives loans to the commercial banks with collateral? Collateral हमें पता है, कुछ हमें गिरवी रखना पड़ता है, राइट? सेंट्रल बैंक, हमारा जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज द आरबीआई, जब कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, राइट, तो वो किस रेट पे देता है? What is that rate called? Is it repo rate? Is it bank rate? Is it reverse repo rate? Or is it LRR? You have to think. Yes, the answer is option A, रेपो रेट. रेपो रेट इज दैट रेट जिसके ऊपर जो हमारा आरबीआई बैंक है वो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है विद collateral. Okay, moving on to the next question. By advising the government from time to time, central bank acts as a, आपको पता है सेंट्रल बैंक जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स को है उनको एडवाइस करता रहता है, राइट? सो why, how is it acting exactly? Is it acting as a banker, an agent, a financial advisor, or none of the above? I guess yes, he's acting as a financial advisor here. Yes, central banks, commercial banks could time to time financial advices देता है that what should they do, how they should regulate their banking system. So yes, they are acting. The RBI, the Central Bank of India, is acting as a financial advisor for the commercial banks, right? Can we move to the next question? Yes. Why do banks only keep a fraction of deposits?
आपको क्या लगता है बैंक सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट ही क्यों रखते हैं, बाकी एडवांस क्यों कर देते हैं? All the depositors do not want to draw the same. There is a constant flow of deposits in the economy, both A and B or none of the above. Guys, banks existence में क्यों होते हैं? They want to multiply the money. वो हमारा पैसा जो हम नॉर्मल पीपल बैंक में जमा कराते हैं उसकी मदद से अपने प्रॉफिट को अर्न कर पाते हैं, राइट? उनको पता है कि हमने जब बैंक में पैसा जमा कराया तो सारे इन्वेस्टर्स, सारे डिपॉजिटर्स एक साथ अपना पैसा मांगने नहीं आएंगे, राइट? So all depositors do not withdraw their money at the same time. Also, there is a constant flow of deposits in the economy. ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट कराना बंद कर देंगे, राइट? तो बैंक अपने पास सिर्फ एक फ्रैक्शन क्यों रखता है, दैट इज LRR, सिर्फ लीगल रिजर्व रेशियो के फॉर्म में कुछ कैश अपने पास रखता है, बाकी को लोन्स के फॉर्म में एडवांस क्यों कर देता है? बिकॉज all the depositors do not withdraw their money at one time and there is a constant flow of deposits in the economy. Both. The answer will be both A and B. Are you guys clear? I hope you understood everything that we did today, right? This ends our today's session. I hope you guys liked this video. You understood everything, every concept that we discussed today. If you guys want that I should make videos on any other topic, you can comment down below and do subscribe my channel. I'll see you the next time. Bye guys.